are talking about general defense in tort, which is for the defendant, and we just completed a voluntary non-fit injuria. I will give the link in the description box. Today, we are going to the second one, the second general defense on the list, which is plaintiff is the wrongdoer. इसके support में एक maxim आता है, which is ex turpi causa non oritur actio, which means that immoral cause will not give rise to any action. We have to look at the word causa, which means cause. The cause which you are bringing to the court. आप कोर्ट के पास एक केस एक कॉज लेके आए कि इसने मेरे साथ गलत किया, बट अगर आपका कॉज ही इमोरल है, सो योर केस विल नॉट गिव राइज टू एनी एक्शन और गिव एनी रेमेडी बिकॉज योर कॉज इज इटसेल्फ इमोरल एंड इलीगल. क्या आपको याद आ रहा है कि ये सेम मैक्सिम कहाँ अप्लाइड होता है? यस, इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट सैंक्शनड बाय लॉ. फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ कि अगर आपने किसी को अपॉइंट किया, सपोज यू अपॉइंटेड ए to kill B and you will give money to A to kill B. So suppose you are M and you have given the money to A but still A does not kill B. तो A ने breach of contract कर दिया आपका बात नहीं सुन के, then आप ये cause कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं because your cause which is killing B is illegal, it's नॉट मॉरल. सो ये कोर्ट जवाब देगा आपका जो कॉज ऑफ द केस था वही इलीगल है, इसलिए आई विल नॉट गिव एनी एक्शन. बी विल नॉट सफर एनी लाइबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वॉज इलीगल. सो द क्वेश्चन इज, विल दिस मैक्सियम अप्लाई टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स? एंड द आंसर इज येस एंड नो. यहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है बट इन अ डिफरेंट वे. सो हियर द प्लेंटिफ्स रॉन्ग डूइंग विल नॉट नलिफाई द डिफेंडेंट्स रॉन्ग डूइंग, विच मीन्स दोनों को अपना हिसाब चुकता करना पड़ेगा. प्लेंटिफ ने जो रॉन्ग किया है उसके लिए वो लायबल है एंड डिफेंडेंट जो रॉन्ग किया है उसके लिए वो लायबल है. अनलाइक द लॉ ऑफ टॉर्ट, हियर प्लेंटिफ ने अगर कोई रॉन्ग किया है इसका ये मतलब नहीं है कि डिफेंडेंट पूरा ही छूट जाए. यहाँ पर दोनों का रॉन्ग विल बी कंसिडर्ड. इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यानी कि केस है विच इज़ बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक. यहाँ पे द प्लेंटिफ वॉज अ ट्रेसपासर और वो डिफेंडेंट के लैंड में ट्रेसपास किया था, बट यहाँ पे डिफेंडेंट ने ट्रेसपासर जो प्लेंटिफ था उसके लेग पे बहुत गंदी तरीके से एक स्प्रिंग गन से चोट पहुँचा दी थी. यहाँ पे दोनों ही लायबल है. Plaintiff is liable for trespassing and defendant is liable because he has caused severe injury the plaintiff. यहाँ पे सर फेडरिक पोलॉक ने बहुत अच्छा एक डेरिवेशन निकाला है. उन्होंने ये बोला, even though plaintiff is the wrongdoer, he can claim for compensation unless the wrong done by him has any connection with the harm suffered by him. इसका मतलब the plaintiff has done something which has basically aggravate or which has contributed or which has any kind of connection with the harm suffered by the plaintiff, then the defendant can take the full defense of plaintiff the wrongdoer and he can tell the court that see plaintiff is the one because of whom the wrong or the harm has been caused, so मेरे को मत पकड़िए, you hold plaintiff liable and in that case only plaintiff becomes fully liable. But in this example which is bird versus hallwork, यहाँ पे we have to know the story behind which is the defendant ने अपने गार्डन में ऐसे ही स्प्रिंग गन रख दिया था और जो प्लेंटिफ को जो तकलीफ़ हुआ है दैट इज़ ही हैज़ गॉट हार्म इन हिज लेग, वो उसके ट्रेस पासिंग करने की वजह से नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ नॉट फेयर टू कीप अ स्प्रिंग गन एट योर गार्डन विदाउट टेलिंग एवरीबडी. क्योंकि कोई भी आपका ट्रेस पास कोई भी रीज़न की वजह से कर सकता है. किसी को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो ट्रेस पास कर सकता है, किसी को प्यास लग रहा है बेचारा मर जाएगा वो ट्रेस पास कर सकता है. तो यू हैव टू सी ऑल्सो सी द इंटेंशन. तो इट इज़ नॉट सो स्ट्रिक्ट, देयरफॉर you cannot keep a spring gun in your garden just like that. And so the
trespassing did not cause the severe injury. The severe injury is independent of trespassing. So even though the plaintiff has done trespassing, he will get the compensation of the severe injury. And even though the defendant has done severe injury, the defendant will get the compensation for having been trespassed by plaintiff in this case.